पूरा मीनिंग डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब एक और टर्म आगे दे रही हूँ, नेक्स्ट टर्म इज सीरियल प्रोग्राम्स। The serial programs are orderly arrangements of sub-goals that stretch into the future perhaps for months or years, and if all goes well, will eventually lead to some desired end state. Lead to some desired end state. And if all goes well, will lead eventually to some desired. Okay? Like for example, if you have an aspiration to say become say a clinical psychologist or a doctor, whatever is your aspiration, so उसके चलते हुए आपके जो years of study आप उसमें invest कर रहे हैं, जो आप courses कर रहे हैं और उन courses में जो आप मेहनत कर रहे हैं या networking कर रहे हैं, तो जिस भी तरह की आप investment subject object interactions की कर रहे हैं, वो सारे आपके छोटे छोटे सब गोल्स हैं। ये सारे सब गोल्स आप एक लाइन में ऑर्गेनाइज करके सिंक्रोनाइज करके लैडर चढ़ रहे हैं अपने मेजर गोल की तरफ। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे सब गोल्स आपको आपकी फाइनल जो एम है, आपकी जो भी फाइनल आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है या मेडिकल डॉक्टर बनना है या जो भी आपकी एस्पिरेशंस होते हैं, उसके एक एक स्टेप क्लोजर लेके आते हैं। सो दिस होल सीरीज इज व्हाट इज कॉल्ड अ सीरियल प्रोग्राम। ठीक है, एंड द एंड रिजल्ट वुड बी व्हेन यू अचीव दैट फाइनल एस्पिरेशन दैट यू आर एमिंग फॉर। नाउ in these serial programs, he says another term that is coming is that similarly another thing that is important is what is called as schedules. Schedules, ये terms अभी आपको बहुत scattered लग रही है, बाद में सब organize हो जाएगा। ठीक है, schedules represent devices for reducing the conflict. These are the devices for reducing the conflict among competing needs. Devices to reduce conflict among competing needs and goal objects by arranging for expression of these tendencies. Arranging for expression of these tendencies at different times. So through schedules, an individual may give maximum expression to his or her various aims. If one is give expressions to his or her various aims, if one is efficient at constructing schedules, one can greatly diminish the quantity and intensity of one's conflicts. Diminish the intensity and quantity of one's conflicts. ये थोड़ा सा एक बार पढ़ के देखिए जो आपने लिखा है तो आपको समझ आएगा। Schedules represent the devices for reducing conflict amongst competing needs and goal objects by arranging for expression of these tendencies at different times, and it is through
schedules, individual may give maximum of expression to his or her various aims. And if one is efficient in constructing schedules, then one can greatly diminish the quantity and intensity of conflicts. Now, for example, if you are planning to be a clinical psychologist, you join this course, but then side by side you think कि नहीं मुझे एक internship भी कर लेना चाहिए, ठीक है? फिर आप internship में घुस जाते हैं और आपको लगता है कि अभी मुझे कोई और ऐसा कुछ और वर्कशॉप आ रही है उसमें भी जाना चाहिए, जो कि शायद 14 दिन की है, पर वो मेरे इंटर्नशिप जो 3 महीने की उसमें से 14 दिन खा जाएगी और एमए तो मेरी कॉम्प्रोमाइज हो ही रही है, तब तक सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, जब तक ये मैं सब निपटा के आऊँगी। ये कॉन्फ्लिक्टिंग आपकी कंपीटिंग सब गोल्स हैं, ठीक है? अब अगर आप इसकी शेड्यूलिंग कर लेते हैं कि पहले ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ, है ना, या ये और ये मेरे साथ इन टैंडम हैंडल हो जाएगा, मे बी 2-3 दिन का ओवरलैप है, आई कैन मैनेज, या आगे पीछे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट कर लूँ, ये शेड्यूलिंग करते हैं, ठीक है? तो आप जब ये शेड्यूलिंग कर पाते हैं अच्छे से, तो आप अपने सारे एम्स को प्रॉपर एक्सप्रेशन दे पाते हैं और अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स की इंटेंसिटी और क्वांटिटी को कम कर पाते हैं, ठीक है? डन है? और अब जब आप एक सीरियल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, उसमें आपके जब सब गोल्स हैं तो उसमें शेड्यूलिंग करना ज़रूरी, अदरवाइज आपका वो सीरियल प्रोग्राम पूरा हॉचपॉच हो जाए एंड इट मे नॉट लीड टू द एंड रिजल्ट, ठीक है? सो अनदर टर्म दैट कम्स इन here is ordination. Ordination, O-R-D-I-N-A-T-I-O-N. O-R? Ordination. Now, हमारे subsume serial programs and schedules under ordination. दोनों को उसने ordination के अंदर subsume कर दिया। दो टर्म्स किए ना अभी, serial program and schedules. Serial programs and schedules are subsumed under the term ordination, which includes the process of plan making as well as the outcome of the processes. As well as the outcome of the processes. Ordination is a higher mental process at the same level as cognition. ये जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अब क्या करूँ, क्या क्या कोर्सेज करने हैं, कैसे कैसे, how do I proceed and then how do I schedule, that is ordination. So ordination now is higher mental process on the same level as cognition. So the aim of cognition is a complete conceptual understanding of the environment. Aim of cognition is complete conceptual understanding of the environment. But once the external situation has been sufficiently understood, I'll repeat. The aim of cognition is a complete understanding of, a conceptual understanding of the environment. But once the external situation has been sufficiently understood, the process of ordination asserts itself. The process of ordination asserts itself in order to arrange and plan the strategy and tactics. Okay? So basically, if you are trying to understand the personality of a person, what are the basic life goals, what are the sub goals, how the person is
making a whole strategy of those sub-goals, how the person is proceeding through those sub-goals and leading to the final goal. All these are indicators of one's personality. Okay? Some of us might be very good at ordination. I generally, if I may say so, अगर मैं अपनी बात करूँ, more of introspection, I feel, people who know me, I don't know whether they agree to it or not, but then I genuinely feel myself that I am a solution-centered person. ठीक है, मुझे प्रॉब्लम, लोग होते हैं ना प्रॉब्लम पे हाथ करते हैं, मुझे होता है हाँ प्रॉब्लम है, करना क्या, आगे का सोचो, solution centered. So that's the way I proceed. But when I you keep on comparing yourself with others who are at times even better off than you. But then yes, we as